Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. In this sheet, we have 3 different parts to get to know. In each part, we'll have a new topic which will be related to a different subject. So we have 3 different subjects in this sheet: English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, Maths. Write appropriate sign of lesser than, greater than or equal to. Okay, we are having 3 different signs and we have to use these in between of these numbers. हमारे पास 3 साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. और क्या करना है हमें? वी हैव टू पुट दी साइन इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स. प्रॉपर बॉक्स में ही, हमें करेक्ट बॉक्स में ही इन साइंस को पुट करना है. लाइक लेसर देन मीन्स जो छोटा नंबर होगा उसके साइड जो पॉइंट होगा वो क्लोज होगा. अंडरस्टूड? लेसर देन की साइन लगाएंगे. जहां ग्रेटर होगा वहां हम ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे. और जहां दोनों नंबर्स इक्वल होंगे वहां पर हम इक्वल टू की साइन लगाएंगे. अंडरस्टूड? और आप सिंपल वे में अगर समझो तो जब हम जिस साइड पे आपका जो नंबर स्मॉल होगा, अगर 11 और 16 दिया हुआ है, ओके 11 और 16 है, सो आप क्या करेंगे? 11 कौन सा है? 11 छोटा है, तो 11 में आप लेसर, यहाँ पे आप लेसर देन की साइन लगाएंगे. मीन्स यू विल मार्क इट लाइक दिस. ओके, जो बिग नंबर है उसके सामने ये एरिया ओपन रहेगा, स्मॉल के सामने पॉइंटेड रहेगा, लाइक दिस. 18 बिग है, 12 स्मॉल है, दिस. ओके, 26 बिग है, 24 स्मॉल है, 37 बिग है, सो यहाँ पे ओपन रहेगा. 49 बिग है, यहाँ ओपन रहेगा. ये देखिए 44 और 44 दोनों इक्वल है, तो वी विल मार्क इक्वल टू. 51 और 15, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो जो नंबर बड़ा रहेगा मीन्स ग्रेटर नंबर रहेगा, उसके साइड का माउथ ओपन रहेगा, और स्मॉल वहां पर माउथ क्लोज रहेगा. अंडरस्टूड? इसको आप सिंपली समझ सकते हैं बाय दिस वे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इफ यू still have any kind of doubt, you can ask me again related to this. Okay, or you can watch this part again. Now let's revise numbers from 1 to 10. Number names from 1 to 10. O N E 1, T W O 2, T H R double E 3, F O U R 4, F I V E 5, S I X 6, S E V E N 7, E I G H T 8, N I N E 9, T E N 10. So we have read number names from 1 to 10.
let's move to our next section, which is of English. Write all the vowel letters. As we all know, our alphabet are divided into two different groups. हमारे जो alphabets हैं वो दो groups में divided हैं, which are vowel and consonant. So we all know that there are 5 vowels: A, E, I, O, U. These are all the 5 vowels. You have to write all the 5 vowels here. ओके यहाँ जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको सारे 5 वॉवल्स राइट करने हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. Understood? And the consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So, these are all the consonants. See the next question. Match the picture with the starting letter of consonant. ओके यहाँ तीन पिक्चर बने हुए हैं. इनको आपको इनके फर्स्ट लेटर से मैच करना है. लाइक P फॉर पैरट, T फॉर ट्री, M फॉर मून. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेक्शन, विच इज ऑफ EVS Environmental Studies. The question is, write down traffic rules. ट्रैफिक रूल्स से यहाँ पे हमें राइट करने हैं कि ट्रैफिक मीन्स रोड पर चलते समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट रन आवर व्हीकल वेरी फास्ट. हमें अपने इस गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए. वी शुड मूव इन करेक्ट लेन, का सही लेन में हमें जाना चाहिए. ओके, we should beep the horn if needed. अगर ज़रूरत है तभी हमें हॉर्न बजाना चाहिए, बीप करना चाहिए. ओके, these are a few traffic rules which we should follow while moving from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाते समय इन ट्रैफिक रूल्स को ध्यान रखना चाहिए. Understood? Yeah, I hope you all have understood this sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.